Hello, this is Riya and you're watching the News Point. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has issued a stern warning following recent communal clashes in Bareilly. The unrest erupted after Friday prayers, leading to significant tensions in the region. In his statement, CM Yogi emphasized the state's unyielding stance against any attempts to disturb communal harmony. The disturbances in Bareilly occurred after the Friday congregational prayers, with reports indicating clashes between two communities. The situation escalated rapidly, prompting immediate intervention from local law enforcement agencies. Authorities have since restored order and an investigation is underway to ascertain the causes and individuals responsible for inciting the violence. Reacting to the incident, CM Yogi remarked, "The Maulana seems to have forgotten who holds the reins of power in Uttar Pradesh. We have taught such elements a lesson before and we will not hesitate to do so again." पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे, उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं, और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था, और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे, उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। In response to the unrest, the Uttar Pradesh government has deployed additional security forces to ensure peace and prevent further incidents. The administration has also initiated a crackdown on individuals found to be instigating communal tensions, with several arrests made. CM Yogi reiterated the government's commitment to maintaining law and order, stating those who attempt to disrupt the state's peace will face stringent action. The incident and CM Yogi's subsequent remarks have sparked a political debate across the state. Opposition parties have criticized the government's handling of communal issues, alleging that such incidents are a result of the administration's divisive policy. Conversely, the ruling party maintains that the government's firm approach is essential to uphold communal harmony and deter those seeking to create unrest. The Bareilly clashes serve as a reminder of the delicate balance required to maintain communal peace in a diverse state like Uttar Pradesh. While the government's swift response underscores its commitment to law and order, it also highlights the challenges faced in addressing communal tensions. As investigations continue, the state's leadership remains vigilant, ensuring that peace prevails across all districts. For more updates, keep watching the News Point.